Hello children, welcome back to our biology classes. In the previous class we have done an experiment on resins to understand the process of osmosis. Okay, so we know that when we put some resins in normal water, what we will see after a few minutes, we will see that the resins will swell up. This process is done because of the osmosis, because in that case the layer of the cells of resins behave like a semi-permeable membrane, where the movement of solvent, that is water molecules, takes place from their higher concentration, that is from the beaker water, to the lower concentration where inside the cell of the resins, so that the cell of resins becomes swell up and we find the resins, all the resins become swell up. So this is about the cell. So this is how the water is absorbed by the root hairs. Now we will start the next step, as on that day we have studied that the transport of water and minerals up to the leaves from the root hairs takes place by three different passages. First step is the absorption of water and minerals by individual cell, that is the root hair. Second step, short distance transport, that is the cell to cell movement in cortex cells of the root. And the third is long distance transport, that is the upward movement through the xylem vessels. So the first process we have studied, let me tell you, make you understand with the help of this diagram. You just understand this is a root and this is a root hair. Okay, like this root hair, so many root hairs are arising from the primary root. Okay, when you will cut the TS or transfer section of this root, you will find this elaborated structure in the microscope. So it will be easy for us to study like that. In root hairs, this is the root hair, and these blue color blocks, you can see these are the soil particles, and here the water molecules and minerals are there. The water molecules are absorbed by the root hairs by the process of osmosis, and the minerals are absorbed by the process of active transport. Because we know that what is active transport? Active transport is the movement of the molecules from their lower concentration to the higher concentration, opposite to the osmosis. So earlier हम जानते हैं, हमने आपको बताया था कि रूट हेयर्स में जो सॉल्ट का, मिनरल्स का कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग वाटर और सॉइल वाटर. सो बिकॉज ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, the movement of other minerals will be from their lower concentration to the higher concentration. So you find it कि water का movement जो होता है वो from soil water to the root hairs takes place by the process of osmosis and diffusion, और जो minerals होते हैं उनका movement होता है by the process of active transport. Okay, so this is the movement in root hairs. सेकेंड स्टेप जो होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट. अब हम आते हैं रूट हेयर से बढ़ जाते हैं रूट की तरफ. ओके, सो दिस इज़ द एलाबोरेटेड इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी ऑफ अ रूट. एपिडर्मिस, दिस इज़ द, यहाँ हमारी जो लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड द एपिडर्मिस. ओके, इसके बीच में बिगर पॉलीगोनल और ओवल शेप की सेल्स होती है हैविंग मच इंटरसेलुलर स्पेसेस. These are called as cortex cells. Okay, so इसमें सेल टू सेल, वन सेल से अनदर सेल, अनदर सेल से अनदर सेल्स, इस तरह करते करते ये रूट में एक सेल से दूसरी सेल से होते हुए एकदम मिड में पहुंचता है. दिस इज़ द मिडिल पार्ट एंड दैट इज़ द मिडिल पार्ट जहाँ पर हमारे वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं. व्हाट आर द वैस्कुलर टिश्यूज़? जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड एज वैस्कुलर टिश्यूज़. तो ये सारे कॉर्टिकल टिश्यूज़ होते हैं और मिड में होते हैं हमारे वैस्कुलर टिश्यूज़. ओके, तो ये हम देखिए आगे, यहाँ कॉर्टेक्स से होते हुए ये हो गया एंडोडर्मिस. ओके, इसके बाद इसमें है दीज आर द जाइलम सेल्स. ओके, द रेड कलर, एंड दीज ग्रीन कलर सेल्स आर द फ्लोएम सेल्स. तो यहाँ से वाटर और मिनरल्स होता हुआ हमारे एंडोडर्मिस में आता है. फ्रॉम एंडोडर्मिस इट इज़ ट्रांसफर टू द जाइलम सेल. फ्रॉम वन जाइलम सेल्स, कौन सी? जाइलम वेसल्स. ओके, फ्रॉम वन जाइलम वेसल टू द अनदर. So this is how the short distance travel, that is the transport of water and minerals from
one cell to another, that is the cells of cortex in the root itself. यहाँ पर आके हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट होता है. Now the conduction of water in the root cells is over here. Now the next step is the long distance transport, that is the upward movement through the xylem. अब हम ये देखते हैं कि हमारे रूट के एंड तक वाटर और डिजॉल्व मिनरल पहुँच गया है. नाउ द वाटर सेल सैप हैज़ टू रीच through the stem in upward direction up to the leaves. So first of all we must know what is cell sap. Water and minerals together called cell sap. Now the next is ascent of sap. Ascent मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना, और sap मतलब what I said. So the upward movement of cell sap through the stem up to the leaves is called ascent of sap. Okay, so the water absorbed by roots is called sap because it is actually the dilution of minerals. एक बार जब sap हमारे स्टेम तक पहुंच जाता है, फिर एक तरह का प्रेशर क्रिएट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज रूट प्रेशर. Okay, the plant roots build a pressure that forces water upward in the xylem vessel. It is called the root pressure. This just because of this root pressure, the water and minerals, that is the sap, start moving in upward direction and that is called as ascent of sap. तो हमारे रूट प्रेशर का दो फंक्शन होता है. एक तो होता है द मूवमेंट ऑफ और फंक्शन ऑफ रूट प्रेशर इज़ ascent of sap, and second function होता है इनका, it holds the water. ये हम जो हमारे जो जाइलम वेसल्स में जो वाटर एंड मिनरल्स, हमारे जो जाइलम वेसल्स में वाटर एंड मिनरल्स हैं वो कहीं वापस से नीचे ना गिर जाएं, सो इनका रेगुलेशन भी हमारे रूट प्रेशर की वजह से होता है. कैन सी इट प्रोवाइड्स द इनिशियल पुश टू the water molecules in the xylem. It also holds the water column up. So these are the three steps of the transportation of water and dissolved minerals in the plants, started from root hairs and up to the leaves. Now the next topic is transpiration. As we have studied earlier so many times, like transpiration is the loss of water from the outer surface of the plant. The transpiration is the loss of water from the leaves and stem of the herbaceous plants. You know, herbaceous plants, these plants are very soft, very delicate, and along with the leaves, their stem are also green in color, means their cells are also possessing stomata, and along with the leaves, the stem also transpire water. Second